Hello my dear students, good afternoon, welcome back for the next lecture. Today we are going ahead to a sub-unit of the main unit, that is electrostatic का जो main unit है उसका sub-unit में हम जा रहे हैं, that is the capacitance, and it is the last sub-unit of the electrostatic. तो electrostatics में this is a very big lesson, उसमें हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, चार्जेस के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने गॉसेस थ्योरम के बारे में पढ़ा, फिर पोटेंशियल के बारे में पढ़ा. Now we are moving towards capacitance now, and it is the last subunit of the electrostatics. Now, as the word indicates, capacitance. What is capacitance? Capacitance is just like a capacity. Just for example, we have a bag. School bags. You have school bag. So you may have a small school bag, you have a big school bag. It all depends upon its capacity. तो आप कितनी बुक्स लेके जाना चाहते हैं? थोड़ी बुक के लिए आपको छोटा स्कूल बैग चलेगा. काफी ज्यादा बुक्स लेके जाना चाहते हैं, you need a big school bag. Similarly, we have a polythenes, or you can say carry bags. For 1 kg के लिए we have a small carry bag. For 5 kg or 10 kg we need a very big carry bag. Similarly, we have capacitance of a beaker. If we have a beaker for example 250 ml का beaker है हमारे पास, 250 ml, तो its capacity is maximum. Its maximum is 250 ml. तो आप उसमें 50 ml डाल सकते हैं, 100 डाल सकते हैं, 250 भी डाल सकते हैं. But if you put few drops extra, तो वो overflow हो जाएगा. तो what is the capacity of that beaker? Is 250 ml. Similarly, everybody, either it is a conductor or insulator or dielectrics you can say, तो हर बॉडी की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी होती है, चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, and that is called its capacitance. So what is capacitance? Capacitance, obviously electrical capacitance, it is the measure of the ability of a substance to store charge, electrical charge. किसी इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने की क्षमता को, कैपेसिटी को कैपेसिटेंस कहते हैं. नो, कैपेसिटेंस किसी की इनफाइनाइट नहीं हो सकती. फॉर एग्जांपल किसी की कैपेसिटेंस कुछ, फॉर एग्जांपल 100 कूलम चार्ज को होल्ड करने की है, तो मैक्सिमम 100 कूलम ही करेगा एट पर्टिकुलर पोटेंशियल. उससे ज्यादा नहीं कर सकता. उससे ज्यादा करेगा तो लीक हो सकता है, लीक टू द सराउंडिंग्स. कम कर सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम. तो हर एक सब्सटेंस की चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, एंड दैट इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटेंस. This is electrical capacitance. Is the measure of the ability of a substance to store electric charge. That is the capacitance. For example, we have a body, any body, either it is a conducting or an insulator. लेकिन हमने इसको कहाँ रखा है? Insulated stand पे रखा है. तो अगर हम इसे चार्ज देंगे, चार्ज दे रहे हैं, बाहर से चार्ज दे रहे हैं, थोड़ा चार्ज दिए, तो obviously if we give some charge Q, तो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, कि you know it. Potential is because of the charge. अगर चार्ज ही नहीं होगा तो पोटेंशियल जीरो होगा. तो पहले इसका पोटेंशियल जीरो था, क्योंकि चार्ज भी जरूरत ना, और हमने थोड़ा सा चार्ज ट्रांसफर किया, इसको चार्ज दिए, तो पोटेंशियल इसका V हो गया. थोड़ा और चार्ज दिए, और चार्ज दिए, इसका पोटेंशियल और राइज हो गया, थोड़ा और राइज हो गया. हम और चार्ज देते हैं. मान लेते हैं किसी भी इंस्टेंट पे इसका पोटेंशियल कितना है? V. And charge कितना है? Capital Q. Capital Q is not a maximum charge, and V is also not a maximum potential. तो इसका पोटेंशियल और इसका चार्ज जो है डिपेंड करता है कितना चार्ज दिए, इसके पोटेंशियल इसके चार्ज पे डिपेंड करता है. तो पोटेंशियल कैन बी मोर. अगर उसका पोटेंशियल ज्यादा है तो चार्ज उस पर और आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं. ना फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे, तो अगर हम चार्ज दे रहे हैं किसी बॉडी को, तो चार्ज, तो पोटेंशियल उसका राइज होता है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. वैसे भी आपने पीछे ड्राइव किया V इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. तो you can see dimensionally, you can see potential is directly proportional to charge here. So see here, potential is directly proportional to charge. तो अगर हमने इस बॉडी को चार्ज कर दिया, कितना चार्ज दिया हुआ है? Q. See, Q is not the maximum charge. तो हमने इसको चार्ज दिया, किसी वक्त पे उस पे चार्ज कितना है? Q है.
और उस वक्त उसका पोटेंशियल कितना है, V है. तो V is proportional to Q. If Q increases, V also increases. If Q decreases, V also decreases. And for simplicity, we are giving a positive charge. The V is directly proportional to Q. So if you remove the direct proportionality sign, so we will have 1 upon C. 1 upon C is the constant of proportionality. 1 upon C. What is 1 upon C? I will tell you. तो C को अगर हम इधर ले जाते हैं, Q upon V. This is an important formula. Very, very important formula. आप इसे याद कर लें. इसे टिप्स पे याद रखें. C equals to Q by V. C equals to Q by V. Where? What is C? C is the capacitance. Where C is the capacitance of the conductor or a substance here. C is the capacitance. And what is the reciprocal of the capacitance? This is 1 upon C. What is 1 upon C? This is very important. Students इसको याद नहीं करते. This is का elastance. Elastance of the substance. Elastance. इसका symbol S होता है. So what I want to say, S 1 upon C को हम क्या लिख सकते हैं? S. And what is S? Elastance. And what is C? C is the capacitance. So let's stick to the capacitance C. So what is C? C is the capacitance of a conductor or a substance. It is the charge holding capacity of a body and it is constant for a given conductor. So capacitance किसी की निकाल सकते हैं. If it is Q and its potential is V, the capacitance is equals to Q upon V. And the graph between Q and V is a straight line. And if you want to find the capacitance from it, so you can find, say it is delta Q for example, and it's delta V, you can find delta Q upon delta V. तो उससे भी निकाल सकते हैं. You can find the slope of this V versus Q graph with Q axis. This slopes, say for example tan theta, so C equals to this gives tan theta, and that's tan theta is equals to capacitance. तो slope से भी पता लगा सकते हैं. But slope किसके versus क्या है? It's a V versus Q or Q versus V graph, and it's slope with the Q axis. This also gives the capacitance. Now this is the capacitance. Now let's go for the units and symbols of it. Now capacitance के बारे में मैं बता रहा हूँ. तो capacitance का symbol, capacitance of a simple conductor. This is a capacitor. What is a capacitor? Capacitor. Capacitor is a device that stores charge, that has a capacitance. So capacitor का ये, this is capacitor. It's a device which has a capacitance. पहले हम इसे कंडेंसर भी कहते थे. कंडेंसर आप सुनेंगे, जो पुराने लोग हैं, पुराने इलेक्ट्रिशियंस हैं, instead of capacitor they are using a word condenser. But today we are using capacitor. There is a difference between this, but it's a modified form. That's a capacitor. This is symbol for a condenser, or you can say capacitor. This is, see, these two are parallel plates. This plate is like this. This is condenser. This is capacitor. और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है? C. जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा या लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, we have a resistor. रेजिस्टर कैसा होता है? ऐसा होता है. और उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? R होती है. रेजिस्टेंस टू अपोज, the ability to oppose the flow of charge through it. तो वैसे ही हर बॉडी की क्या होती है? कैपेसिटेंस होती है. और कैपेसिटेंस के लिए सिंबल C है, और जो चीज बॉडी होती है जो होल्ड करती है, जिसको कैपेसिटर कहते हैं. So for all capacitors we have this symbol. For all types we have different types of capacitors. Spherical capacitors, cylindrical capacitors. So all types of capacitors we use this symbol. This is a symbol of capacitor. This is condenser. This is the old name of capacitor. If I put the arrow into it, this is called a variable capacitor. Variable capacitor. Now सभी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कैपेसिटर यूज कहाँ होता है? कैपेसिटर हर जगह यूज होता है, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट से लेके बड़े बड़े तक.
छोटे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कैपेसिटर यूज होता है. आई विल शो यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर. और आपने देखा होगा फैन के ऊपर भी एक सेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज आल्सो कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. और मोटर के ऊपर भी होता है एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. तो capacitors are always there in our electrical appliances, even in refrigerators, ACs. In all these things we have a capacitor. तो फैन के ऊपर आप इजीली देख सकते हैं, फैन के ऊपर एक छोटा सा सिलेंड्रिकल मिलेगा डिवाइस एंड दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर. उसमें कैपेसिटेंस भी लिखी होगी. हाँ, वेरिएबल कैपेसिटर. वेरिएबल कैपेसिटर कहाँ? वेरिएबल कैपेसिटर वो होता है नॉब लाइक थिंग जिसकी कैपेसिटेंस को हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं. दिस इज अ वेरिएबल कैपेसिटर. और ये हमें मिलता है ट्यूनिंग सर्किट्स में. ट्यूनिंग, आप बोलोगे ट्यूनिंग सर्किट्स क्या होते हैं, ये बाद में आएगा लेकिन फिर भी बता देता हूं. जैसे हम रेडियो ट्यून करते हैं तो आप देखते होंगे उसमें एक वॉल्यूम का नॉब होता है और एक दूसरा ट्यूनिंग का नॉब होता है जिसमें हम डिफरेंट रेडियो स्टेशन ट्यून करते हैं. डिजिटल का जमाना है लेकिन यू विल फाइंड इट. अगर आप एफएम देख रहे हैं 92.7 एफएम और 103 एफएम, तब भी आप ट्यून करते हैं. उसमें वी यूज a variable capacitor or a variable inductor. तो मोस्टली वी यूज वेरिएबल कैपेसिटर. तो कैपेसिटर हम वेरी करते जाते हैं और वी गेट ए डिफरेंट सिग्नल्स. रिसीवर जो होता है डिफरेंट सिग्नल्स को रिसीव करता है. दिस इज अ वेरिएबल कैपेसिटर, द सिंबल ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर. दिस इज अ फिक्स्ड कैपेसिटर, दिस इज अ वेरिएबल कैपेसिटर. तो लेट्स गो टू द यूनिट्स. So what's the units of the capacitance? What's the formula of capacitor? C equals to Q by V. And what is the reciprocal of the capacitor? Capacitance, or you can say it is elastance. This is very important. Elastance. And the symbol for elastance is S. Now, SI unit. SI unit of capacitance. What is the formula? C equals to Q upon V. SI unit is 1 farad. 1 farad is equals to 1 coulomb upon 1 volt. This is 1 farad. 1 farad farad, 1 coulomb upon 1 volt. The symbol of farad is F, capital F, 1 upon C upon 1 upon 1 V, or simply V. This is 1 volt, 1 coulomb. So 1 farad, one capacitance is said to be 1 farad if a substance holds 1 coulomb charge having a potential of 1 volt. तो किसी बॉडी का चार्ज 1 coulomb हो और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट हो तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है? 1 farad होती है. बट farad is a very big unit. It's a very big unit. It is a very big unit. ये काफी बड़ी यूनिट है, जस्ट लाइक लाइट ईयर्स होता है हमारे डिस्टेंस में. तो ये farad is a very big unit. It's not a practical unit. तो what is a practical units? Practical unit is a microfarad. तो जब भी आप कोई कैपेसिटर देखेंगे you will find it. Practical units. Practical मतलब practically जो हम यूज करते हैं कैपेसिटर्स, उसकी यूनिट्स क्या होती है? We have a 1 microfarad. What is 1 microfarad? 10 raised to minus 6 farad. See, 1 microfarad, 10 raised to minus 6 farad. 1 nanofarad कम होता है, but minus 9. 1 picofarad, yes, picofarad is there. Small p, picofarad. 10 raised to minus 12 farad. So these are this and this. This is better one. 1 microfarad, 1 picofarad. 1 microfarad, 10 raised to minus 6 farad. 1 picofarad is 10 raised to minus 12 farad. These are the practical units of capacitance. तो जो भी आप कैपेसिटर देखेंगे, आप फैन में कैपेसिटर देखना, you will find it. माइक्रोफैरेड्स में कुछ लिखा होगा, some 7 माइक्रोफैरेड, maybe 16, कुछ भी लिखा होगा, 740 भी लिख सकते हैं, whatever, but it should be written in microfarads. It's not farad. Farad is a very big unit. तो मैं आपको बताऊं, it's such a big unit that even अर्थ इतनी बड़ी है, इतना रेडियस का अगर हम कैपेसिटर बनाए तो उसका कैपेसिटेंस कितनी होती है? 711 माइक्रोफैरेड. अर्थ इतनी बड़ी, अर्थ काफी बड़ी, अर्थ 6400 किलोमीटर उसका रेडियस, और उसकी कैपेसिटेंस कितनी है? सिर्फ 711 माइक्रोफैरेड. दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ. तो आई विल प्रूव इट.
कि 711 माइक्रोफैरड होती है कैपेसिटेंस अर्थ की, एंड इससे पता लगता है कि माइक्रोफैरड इज a स्मॉल यूनिट बट फैरड इज a very बिग यूनिट। अर्थ जितनी बॉडी का कैपेसिटेंस भी 1 फैरड के बराबर नहीं है, तो फैरड इज a very big unit. Practical units are this, and other units are CGS units में क्या है इसके? CGS यूनिट है हमारे पास स्टैट फैरड। CGS units of capacitance। CGS units में पहले आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स में we have one stat farad, electrostatic unit, that is called one stat farad. If you solve it, you will find it this is equals to 1 upon 9 into 10 raised to power 11 farad. You will find it this is 1 upon 9 into 10 raised to power 11 farad. This is electrostatic unit. This is one stat farad, and this is 1 upon 9 into 10 raised to power 11 farad. This is electrostatic unit. If you want electromagnetic unit, the electromagnetic unit is ab farad. Electromagnetic unit. This is 1 ab farad, and 1 ab farad is equals to 10 raised to power 9 farad. It is 10 raised to power 9 farad. So these are the units of capacitance. So what is a capacitor? Capacitor is a device that holds charge, that stores charge, that is called a capacitance. इसका फॉर्मूला क्या है? मेन फॉर्मूला कौन सा है? C equals to Q by V. And what is 1 upon C? That is very important. 1 upon C is called elastance. और elastance की यूनिट obviously क्या होगी? Farad inverse. वो farad किसकी यूनिट है? ऐसा यूनिट कैपेसिटर की है। Farad is a very big unit. We have a microfarad, nanofarad, picofarad, microfarad, and picofarads are much in use. We have different types of capacitors. We have a spherical capacitor. We have a cylindrical capacitor. We have CGS units of capacitance also. We have done a variable capacitor also. Variable capacitor मैंने बताया आपको tuning circuits में use होता है. That's all for today. Thank you very much.